everyone, in this video we will be learning about beta and gamma functions. Functions हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, जैसे कि there is a relationship between some set of inputs and some set of outputs. So some relationship is there that is defined by the function. So what is beta and gamma function? That's nothing but some special type of functions which we use it while solving the integration. So let's see what it is. सबसे पहले देखते हैं बीटा फंक्शन की मतलब डेफिनेशन क्या है, मतलब हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या है. So now this gets represented by this letter which is a beta, and beta function always it always comes in two variables, and gamma function is always in one variable. So first of all we will write about see about beta function. So the formula is from 0 to infinity x raised to m minus 1, 1 minus x raised to n minus 1, where m and n values are positive. There are some other formats also to write the beta and gamma beta functions. So there are, which is here I have written here other two form, the way of writing. So here it is in terms of sine and cos terms, which is there twice 0 to pi by 2 sine 2m minus 1 theta into cos 2n minus 1 theta d theta, and the other one is again it's in the form of x and x power of x. So this is, we can write it in two different ways. One is in the form of m power and one is in the form of power of, in the x power is in the n form. So यहाँ पे 0 to infinity x raised to m minus 1 लिया है. Same way we can write about x raised to n minus 1. So दोनों different तरीके, that's the only difference you will be you can see it. Other than that everything is same. Denominator यहाँ पे भी same ही, यहाँ पे भी same ही. Limit is also same. So these are different ways of writing beta functions. We will be using all of this depending on what the question is. So the सारे forms, सारे the way of representing beta function in all forms, it's important, आपको वो आना चाहिए. Let's see about the gamma function now. Gamma function के किस formula जो है ये, this is the symbol which we use it to represent. This is the symbol for gamma symbol, gamma of n, where n is nothing but any positive number. So limit is between 0 to infinity, and e to the power minus x raised to minus n minus 1, and इसका integration लेना है with respect to x. So this is what the gamma function definition is there. And also there is some relationship exists between beta function and gamma function. So the relationship is, we will be looking for relation, what is the relation, and we will see how we are going to prove that relationship, because sometimes in the exam also they ask about the how we can prove that. तो हम वो भी देख लेते हैं कि उसका प्रूव कैसे करना है. स्टेटमेंट, सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं. व्हाट इज द रिलेशन बीटा फंक्शन इज इक्वल टू गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n. सो उसका प्रूफ कैसे लिखना है, वी विल स्टार्ट गोइंग थ्रू इट. सो सबसे पहले तो गामा फंक्शन, हाउ वी राइट इट, that we are going to write as it is in the general form, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया है. The same way we will be writing over here, that's the general form. Now what we can do it, here we will be left hand side as well as right hand side in order to in order to find the relationship between gamma and beta function. What we can do it, लेफ्ट हैंड साइड जो भी है और राइट हैंड साइड जो भी है वहाँ पे हमें e रेस टू माइनस जेड, ई जेड रेस टू m माइनस 1 से हमें मल्टीप्लाई करेंगे और उसका इंटीग्रेशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू z विद इन द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी. तो जो लास्ट इक्वेशन था इसमें लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ गामा n था. सो वी आर गोना मल्टीप्लाई विथ ऑल दिस e raised to minus z and z raised to m minus 1, and we have to integrate that with respect to z within the limit 0 to infinity. Same thing मैंने वहाँ पे भी किया है राइट हैंड साइड में.
पहले जो इक्वेशन था हमने प्रीवियस स्लाइड पे दिखा था, इसमें सिर्फ एक ही इंटीग्रेशन है. इफ़ यू सी दैट नाउ आफ्टर integrating with all this, now two integration has got introduced, and along with that we have इसके साथ ही जो e raised to minus z है ये और ये पूरा टर्म जो है ऐड हो चुका है along with one integration sign. So बाकी का जो था वो पहले already था, it was there in that equation. Now let's start here. If you look here, e that is the base common here. So what we can do it, we can add the power by using the law of indice. सेम बेस है तो वी कैन ऐड द पावर. तो मैं यहाँ पे माइनस जेड एक्स है, यहाँ पे माइनस जेड है, मैंने ऐड कर दिया वो पावर को और जेड कॉमन निकाला है. सो आई गॉट दिस माइनस जेड इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस वन. दिस टर्म आई केप्ट इट एज इट इज़. यहाँ पे भी सेम ही है, जेड इज़ द बेस, कॉमन बेस, सो ऐड द पावर. तो पावर को मैंने ऐड किया है एम प्लस एन माइनस एन. सो नाउ लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग इंटीग्रेशन. यहाँ पे जो इक्वेशन हमें मिला है, सेम इक्वेशन आई हैव टेकन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू गो थ्रू द नेक्स्ट स्टेप्स विच विल बी सॉल्विंग. सो वही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया जो लास्ट स्लाइड पे हमें मिला था आफ्टर सिम्प्लीफिकेशन, आफ्टर एडिंग द पावर्स ऑफ डिफरेंट टर्म्स. सो नाउ वी विल डू सब्स्टिट्यूशन. ये y की जगह वी विल बी सब्स्टिट्यूटिंग z इंटू एक्स प्लस वन. मतलब जहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है, सो दैट वी कैन सब्स्टिट्यूट. सो अल्टीमेटली वी डोंट हैव y, so z's value we will be finding by using this. So z and dz we will be finding. Now we can see, we can left hand side I kept it as it is. Now in the right hand side we will keep dz value here. I will be this is the dz value. Before doing that, what we can do it, since we are differentiating with respect to dz first, e to x into x raised to n minus 1 एक constant हो जाएगा, that we will be taking outside the integration. तो मैंने ये बाहर निकाला है क्योंकि with respect to z हम कर रहे हैं यहाँ पे. So बाकी की जो टर्म है z की वो मैंने अंदर रख दी है इंटीग्रेशन के लिए with respect to z. So first of all, then it's easy for us to do take integration. Then before that we will do the substitution. So यहाँ पे if you see this is the dz, instead of dz I have kept a dy. ये dz की जो वैल्यू हमें निकाली थी that I have kept it over here. Then this whole thing is, if you see here, this is we can replace with minus y क्योंकि हमने लिखा y के लिए हमने substitute किया z into x plus 1. So that we can do it. So I wrote it minus y, and here also we can, instead of z we can write y upon x plus 1, y upon x plus 1 and raised to power x plus 1. So that basically we will be we will be giving that power for this term. Basically we will be putting this indice, this whole raised to m plus n minus 1. So this power we will be writing to numerator and as well as denominator. तो मैंने यहाँ separate करके इस power को लिखा है, y की power और z denominator की power. So we just have simplified it. यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो 1 plus x, if you see here this is the denominator, 1 plus x, 1 plus x, we can add the power. So m plus 1, m plus n minus 1 और एक this 1 1. If you add them together, this 1 1 will get cancelled. So simply you will get 1 plus x raised to m plus 1. So that's what I have taken it as outside the integration, because we have to integrate this with respect to y. So only y I have kept it over here. वो x का जो भी था part मैंने निकाल दिया, so that I got only y terms here in the inside integration. So now let's integrate this with respect to y. Before, if you take integration, see if you can find something for it. So if you will observe this is nothing but our gamma function. You can see here the term which you see inside the square bracket. What we can write about it,
it's a gamma function. If you look at the definition of gamma function, so simply we can use that, and we can, for this one, for this square bracket which we have it here, for that we can write gamma function. Rest of the thing, this is which is constant, which you took outside, that will be as it is. तो इसको सिर्फ gamma m plus 1 by using the definition of gamma function we have done it. उससे जो भी लेफ्ट हैंड साइड में था और जो भी यहाँ पे कांस्टेंट निकाला था हमने, वो सेम ही रहेगा एज इट इज़. नाउ यू हैव टू कीप इट इन माइंड, हमें निकालना है बीटा और गैमा फंक्शन के बीच में जो रिलेशन है, दैट वी नीड टू फाइंड. सो व्हाट वी कैन डू इट हियर, ये टर्म जो है वो ऐसे ही रख देंगे, and this part which is there in the form of gamma, that we will shift it on the right left hand side. This, for this part of the equation, LHS part of the equation, what we can write is, ये gamma है n जो है वो वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे, and for this whole integration we can write it gamma m, because that's the definition of gamma function. Now after taking this whole term to the left hand side, what we will get is gamma m upon gamma n upon gamma m plus n, and the right hand side we will be just left with this integration sign. Now if you look at the beta function definition, one of the beta function definition says that this is what we have for beta function. This is the formula, like a definition of beta function is x raised to n minus 1 upon 1 plus x raised to m plus n into dx. This is, and what we have received here, that's exactly same like a beta function's definition, so we can write about it beta mn. So that's nothing but the relationship between the beta and gamma function. So this is quite important relationship. Beta mn is equal to gamma m into gamma n upon gamma m plus n. ये इस रिलेशनशिप को अच्छी तरह से आपको याद रखना है फॉर्मूला, क्योंकि हम क्वेश्चंस में इसको यूज़ करने वाले हैं. सो इसमें इम्पॉर्टेंट जो है फॉर्मूलेज सारे याद होने चाहिए आपको, मतलब बीटा फंक्शन की डेफिनेशन, गामा फंक्शन की डेफिनेशन, और बीटा फंक्शन को 2-3 टाइप से हम डिफरेंट वेज से हम लिख सकते हैं, वो आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए. एंड द सेकेंड थिंग इज़ दिस रिलेशनशिप, क्योंकि इसके ऊपर हम मतलब क्वेश्चंस जब भी सॉल्व करेंगे वी विल बी यूजिंग दिस, सो इट्स अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप. सो लेट्स स्टार्ट लुकिंग सब क्वेश्चंस. ये जो प्रूफ हमने देखा था, प्रूफ ये एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है, सो यू शुड नो हाउ टू प्रूव द relationship between these two functions. Let's discuss in more details in next video.